that merely because somebody finds that I haven't dotted all I's and crossed all T's in my nomination form, I'm dishonest. I'm not saying that is correct. That's wrong. That's wrong. Then in that case, Mr. Uzair, there is no declaration ever far in any case. But the point is, what is the declaration to the contrary by a court of law that 62(1)(f) contemplates? Where does that come from? And I will make some submissions on that. For me, that's a formal process that has to be followed. It's not something that the RO can do. It's not something that the election tribunal hearing appeals against acceptance and rejection of nomination papers. Or a constitutional court? Constitutional court can do it. There is your Lordship's judgment in 2010. There could be mistakes made, but the question is Lord, that is not a mistake. That's a conscious judgment by my Lord, and I rely on it. And that's I'm not noting anything. My Lord, so what I'm saying is, my Lord, my submission was that for me the way out is provided by the logic, the rationale of Samiullah Baloch itself. Samiullah Baloch is deficient because it doesn't follow through with the consequences of its own logic. For example, so that's the problem. And if that gap can be filled, then there is no need to overrule Samiullah Baloch. Samiullah Baloch is a judgment of... On that point, that's why you want to take it forward. You said the Samiullah Baloch gives an answer in paragraph 6 that there should be repentance, but it doesn't talk about it. It touches upon it. And I asked you that how do we follow through? Then you say, no, there is no declaration. So please tell us, the declaration is just the way it is. When does the repentance kick in, and how do you bring that in? There are two stages. First, there will be a declaration by a court. There will be a declaration by the court, and that declaration would be for the purposes of 62(1)(f). One problem with Samiullah Baloch is that it doesn't really deal with what court, what proceedings, what nature of dispute would lead to this declaration. Mr. Bhandari, in paragraph 36 of the Samiullah, there is a word declaratory judgment. The declaratory judgment, what is the declaratory judgment? By the civil court or the high court or the Supreme Court? My Lord, it is, and I heard submissions on that also, my own submission, and I'm guided by my Lord's judgment in 2010 Lahore. This is not a declaration in terms of section 42 specific relief act. It's a constitutional declaration. It is not shackled by the constraints of section 42 specific relief act. It is, and this is not the first time that the constitution has provided for it. Kindly look at article 181. How to give the declaratory judgment unless you examine and cross-examine and produce, allow to production of evidence? Absolutely. How you can reach the declaration? That has to be done. It can't be done without that. But आप कहते हैं कि अगर वो deficiencies, if we give any detail of those deficiencies, वो पूरी कर ले तो फिर वो ठीक है लाइफ बैन? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो लाइफ बैन है ही नहीं, वो लाइफ बैन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप रिपेंटेंस कर ले, अलाउ मी टू सबमिट माय लॉर्ड, और समीउल्लाह बलोच ने ये डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में और भी सिचुएशंस हैं जहां डिस्क्वालिफिकेशन कोर्ट की जजमेंट से फ्लो कर रही है, और कहा है कि जी वहां भी यही है कि जब तक वो कोर्ट की जजमेंट इफेक्टिव रहेगी तब तक डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी. फॉर एग्जांपल 63(1)(a), 63(1)(b, तो 63 जब कोर्ट की डिक्लेरेशन सेक्शन 45 मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का कहता है कि अगर कोई पहले डिक्लेयर हुआ है एज मेंटली डिसेबल्ड, अगर वो ठीक हो जाता है तो कोर्ट अपने ऑर्डर वापस ले सकती है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई. सेक्शन 63(1)(b) अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को डिस्क्वालीफाई करता है, बट सेक्शन 41 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्ट आगे बढ़े जी वो डिस्चार्ज का प्रोविजन देते हैं. बट आपके सर, इन रिस्पॉन्स टू माय लॉर्ड्स क्वेश्चन, काइंडली सी आर्टिकल 184(1) and 2. Article 184(1) says the Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, have original jurisdiction. उसके लिए है ना declaratory judgment. It is with regard to the provinces and the federation. Yes, but kindly read 184(2). In exercise of the jurisdiction conferred on it by clause 1, the Supreme Court shall pronounce declaratory judgments only. So this is a declaration created by the Constitution. This is not subject to any law. No law is required, nor can any law change this. This is a declaratory relief, a remedy created by the Constitution itself. And by definition, my lord, the declaration envisaged by 62(1)(f) cannot
be given under section 42 unless you expand section 42. For example, it says But this declaratory judgment is only in the context of clause 1 of मन के लिए है ये तो शुभों के लिए है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट चले हम आगे नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना, आपने 184(2) का एग्जांपल दिया तो आइन खुद तयन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेटरी जजमेंट दे सकती है। Yes. जरा ठहरिए ना, 62(1)(f) में आइन ये नहीं कह रहा है, 62 में लिख रहा है कोर्ट ऑफ लॉ, या तो आप कहें वो इम्प्लाइड है सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग अंडर 184। इधर लिखने में क्या दुश्वारी थी? मैं अर्ज कर देता हूँ ये तो सारी चीजें फिर अदालत ने की है ना, आइन ने तो नहीं की है। अग्री। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये आर्ग्यू भी हुआ कि जी ये, और आपने भी सवाल पूछा कि ये क्या डिक्लेरेटरी जजमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये जो डिक्लेरेटरी जजमेंट्स का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सेक्शन 42 वाला नहीं है। ठीक तो ठीक, यहाँ भी लिख देते नहीं सर, वो इसके अंदर है, मैं आप अर्ज कर देता हूँ। स्पेसिफिक है मिस्टर भंडारी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये डिक्लेरेशन ये सेक्शन 42 में दी भी नहीं जा सकती, आपकी अपनी जजमेंट है। वो मान ली बात, नेगेटिव, ये तो नेगेटिव डिक्लेरेशन है। हाँ, there being no judgment to the contrary, so the declaratory judgment has to say that someone is not honest, someone is not. So where do you draw the strength from that? कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसी डिक्लेरेशन दे सकते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहली my point number 1 is that this is a unique kind of declaration which is not given in terms of section 42. मैं तो ये कह रहा हूँ ये अगला सवाल आता है। एक एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक केस है सिविल केस, ठीक है, या क्रिमिनल केस ले लीजिए। एक गवाह आकर के झूठ बोलता है, कोर्ट उसको परजुरी के तहत उसको कन्विक्ट कर देती है, परजुरी के तहत। Is he disqualified for? It's a declaration now. You are a perjurer. You have lied in court on oath. You can't possibly be honest. So he's not allowed to contest elections for life. इसका जवाब देते हैं। मतलब मेरे ख्याल में तो he is not disqualified on that basis. तो फिर तो it will directly conflict. खत्म हो जाती बात। Because आप जब किसी को परजरी के, देखिए तो डिक्लेरेशन हो गया ना, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट भी कर दिया। तो मैं जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी कर दिया। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। आर्टिकल 10 है, उसका जवाब है। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। आर्टिकल 10 says there will be due process and fair trial. An elementary principle of due process and fair trial is notice of the charge against you. Now when somebody is being tried for perjury, is he under notice that he will also be disqualified on 62(1)(f? Then that sort of kills the whole thing. आपके मुताबिक 62(1)(f) की डिक्लेरेशन कहाँ से आ रही है? पहले मैं आपको just explain that. मैं वो कई स्टेजेस पे, कई फॉर्म्स पे आ सकती है। स्टेप नंबर 1 बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन चलते हैं। सबसे पहले आरओ के पास नॉमिनेशन पेपर्स जाएंगे, वो नहीं दे सकता। It's not a court of law. He has to be shown some declaration at that time from some court of law. By some court of law, and that declaration has to be specific for the purposes of 62(1)(f). वो कहाँ से, मतलब give us an example. मैं चलता हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप वो स्टेजेस के थ्रू जाएंगे, शायद मेरी बात क्लियर